दुबई में स्वागत है आपका। महेंद्र सिंह धोनी दस्तानों में, क्योंकि विराट कोहली टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करने का उन्होंने फैसला किया। बल्लेबाजी करना पसंद है, कह रहे हैं पिछले मुकाबले में ज़्यादा ड्यू थी नहीं, और जिस तरीके से मुकाबले चल रहे हैं पिच थोड़ा सा धीमा हो जाता है, चेस करने में दिक्कत होती है। तो एक टॉस उनको अच्छा लगा जीत के कि पहले बल्लेबाजी करेंगे, रन्स ऑन बोर्ड दर्ज करेंगे। एक टीम जो दबाव में है उसको थोड़ा सा और दबाव महसूस करवाएंगे। बिल्कुल अच्छी शुरुआत, जब आप टॉस जीतते हो, बैटिंग करने का निर्णय लेते हो, तो आपको शुरुआत अच्छी करनी पड़ेगी। कैप्टन हमेशा चाहता है कि मेरे ओपनिंग बल्लेबाज एक अच्छी शुरुआत देते पहले 4 ओवर में। आपके करीब 45-50 रन आते हैं। अंपायर अनिल चौधरी भारत से, और पॉल राइफल पूर्व ऑस्ट्रेलियन तेज गेंदबाज, आज के ऑन फील्ड अंपायर्स। और हडल चेन्नई सुपर किंग्स कप्तान महेंद्र सिंह धोनी अपने खिलाड़ियों से बातचीत करते हुए, चेहरे पे मुस्कुराहट है, जानते हैं कि ये मुकाबला जीतना है, लेकिन वो दबाव अपने टीम में, अपने खेमे में महसूस होने नहीं देंगे। यही क्वालिटी है महेंद्र सिंह धोनी की। और एरन फिंच और देव पडिक्कल करेंगे पारी की शुरुआत। पडिक्कल का ये सीज़न अब तक बहुत बेहतरीन रहा है, 3 अर्धशतक उन्होंने दर्ज किए हैं, लेकिन आज बल्लेबाज ने काफ़ी पॉजिटिव खेलते हैं, अच्छे शॉट्स खेलते हैं और बड़ी इनिंग खेलना जानते हैं। और ये तक कप्तान है ऑस्ट्रेलियन टीम के एरन फिंच, और इनकी अभी तक शुरुआत इतनी अच्छी नहीं हुई है, इनको रन बनाने पड़ेंगे। 400 से ज़्यादा रन बनाए इन्होंने 81 मैचेस में, 130 रन का स्ट्राइक है, पर आज इनको भी अच्छी बारी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि ये अब ऐसा हफ्ता है कि आप पॉइंट्स टेबल पे आप थोड़ी सी तेज़ी लाना चाहते हैं। आप इस हफ्ते में थोड़ा सा मूव करना चाहते हैं ऊपर की तरफ। आप 14 अंकों में नहीं फंसना चाहते, क्योंकि फिर 14 अंकों में अगर आप फंसते हैं तो फिर नेट रन रेट आता है क्वालिफाई करने के लिए। दीपक चहर 38 विकेट्स हैं, और इनकी अधिकतम विकेट्स जो आती हैं वो पहले 6 में आती, क्योंकि ये एक ऐसा गेंदबाज है जो नया बॉल को मूव कराता है। तो आज कांटे की ये टक्कर है। दोनों टीम जानते हैं आज इस मुकाबले का महत्व, 2 पॉइंट्स का महत्व। दीपक चहर के हाथ में रहेगी गेंद, और पहली गेंद का सामना करेंगे देवदत्त पडिक्कल। स्लिप के साथ महेंद्र सिंह धोनी शुरुआत कर रहे हैं, और ये एक ऐसा गेंदबाज है कि नॉर्मली इनका बॉल हम देखते थे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को अंदर आता था, लेकिन अब बाहर की तरफ भी लहराते हैं। तो एक नई कला इन्होंने सीखी है। और अच्छी बात यह है कि आप जब IPL जैसे प्रतियोगिता में खेलते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। विश्व के महानतम खिलाड़ी आपके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर रहे हैं, अभ्यास के समय आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिस तरीके से अब देवदत्त पडिक्कल को भी विराट कोहली के साथ समय बिताने का मौका है, AB डिविलियर्स के साथ मौका है, आप बतौर सलामी बल्लेबाज एरन फिंच के साथ क्रीज पे है। तो ये एक सीख जो है भारतीय क्रिकेट और भारतीय खिलाड़ियों के लिए बहुत बड़ी सीख रहती है। और मैचेस भी खेलने मिल रहा है, और अच्छा प्रदर्शन भी किया है उन्होंने। तो बिल्कुल 2 साल से RCB के साथ लगे हुए, अंडर 19 खेले हुए इंडिया के लिए, तो अच्छा बेस बना के आए हुए, और जानते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट क्या है। कर्नाटका के लिए उन्होंने बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया है। थोड़ी सी दिक्कत है शुरुआत करने के लिए, कुछ दिक्कतें साइड से इनके पास आती है हमेशा बल्लेबाज के लिए, थोड़ी सी रुकावट। बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं देवदत्त पडिक्कल, काफ़ी प्रभावित है सारे लोग, और इंडियन क्रिकेट का अच्छा भविष्य है जो हमको इस IPL में हमको देखने मिला है।
ऐसा लग रहा है कि कुछ सामने स्क्रीन के कुछ नहीं है। दिव्य पडिक्कल की थोड़ी बहुत मूवमेंट है। पॉइंट टेबल पे एक नजर डालते हैं। 5वें स्थान पे है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 6 अंकों के साथ। चेन्नई सुपर किंग्स 4 अंक है। नेट रन रेट पॉजिटिव में नहीं है। पहली गेंद काफी दूर से लहराती हुई चली गई। स्लिप में खिलाड़ी मौजूद है तो कोशिश यही होगी दीपक चहर की कि गेंद को बाहर की तरफ ही लेके जाएंगे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को। आज अगर चेन्नई सुपर किंग्स ये मुकाबला जीतते हैं तो उनके भी 6 अंक हो जाएंगे। लेकिन जो नेट रन रेट पे आप अगर करीब से देखेंगे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 6 अंक है लेकिन -1.36 है, तो उसमें वो सुधार जरूर करना चाहेंगे। बिल्कुल, दोनों टीम लड़ेंगी आज और पॉइंट्स के लिए लड़ेंगी। जी, थोड़ा सा एरन फिंच की तरफ देख रहे थे दीपक चहर कि आप मेरे बॉल डालने से पहले क्रीज को ना छोड़े। एक चुनौती लेकिन एक मुस्कुराहट के साथ कि आप क्रीज में बने रहे। आपको तो कोई एडवांटेज नहीं देना चाहूंगा। ये देखिए किस तरीके से फिंच को देख रहे थे। बिल्कुल, आपको आगे नहीं जाना चाहिए और फिंच ने बहुत बढ़िया किया। इन स्विंगर से शुरुआत की यहाँ पर। काफी करीबी मामला था वाइट के लिए, पर बिल्कुल वाइट करार गया। सेकंड गेंद, पहला वाला भी काफी करीब था। इन स्विंग जानते हैं, अच्छा आउट स्विंग डालते हैं, इन स्विंग डालते हैं। दूर रखने की कोशिश पडिक्कल से। पडिक्कल की जो टांगे हैं चलती नहीं है, पर ये गेंद कोशिश है बाहर डालने की। बढ़िया सेम पोजीशन है, काफी क्लोज था ये कॉल। तो और गेंदबाज आप चाहेंगे कि आप मैक्सिमम चौथे स्टंप से बॉल को स्विंग करा के वापस अंदर ला सकते हैं, क्योंकि और बाहर से कराने की कोशिश करेंगे तो और बाहर ही चला जाएगा। रिस्ट पोजीशन आपकी बिगड़ जाती है। ये बेहतर लाइन है और बेहतर लेंथ है। यहाँ से गेंद वापस अंदर आएगा क्योंकि सीम पोजीशन बहुत अच्छा रहता है। बढ़िया गेंदबाजी, इसके सामने खेला भी बढ़िया। पता था उनको 2 आउट सिंगर थी लेफ्ट हैंडर के लिए, और ये पावरफुल इनके साथ में क्रिकेट खेली है। बढ़िया गेंदबाज थे, बढ़िया अंपायर है। तो बिल्कुल जैसा वो खेला देवदत्त पडिक्कल ने बहुत बेहतरीन तरीके। और ये हमारे इंडियन अंपायर अनिल चौधरी, ये भी काफ़ी सालों से अंपायरिंग कर रहे हैं और अच्छा एक्सपीरियंस है इनको भी। और IPL में सारे इंडियन अंपायर्स को मौका मिला है अंपायरिंग करने का और अच्छा काम भी कर रहे हैं। बहुत जरूरी, क्योंकि जिस किस्म की ये प्रतियोगिता है, विश्व की सबसे लोकप्रिय ये प्रतियोगिता। बहुत बढ़िया गेंदबाजी अंदर की तरफ लाने की कोशिश की थी। बॉल थोड़ा सा लहरा रहा है और अच्छी बात यह कि थोड़ा सा बैक स्पिन भी मिल रहा है। जब हाथ से गेंद छूटती है तो आप बिल्कुल सेम पोजीशन सटीक देखते हैं। इनका वीक जोन है इन स्विंगर। सारे गेंदबाज इनको अंदर डालते हैं गेंद। बल्ला उनका काफी बाहर से आता है, जो काफी गैप होता है। काफी बार लेग बिफोर आउट हुए, बोल्ड हुए, कॉट बिहाइंड भी होते हैं काफी बार। तो इनका वीक जोन है, तो सब लोग जानते हैं कहाँ डालना है इनको गेंदबाजी। बॉल मूव कर रहा है, अच्छी बात, और दोनों तरफ मूव कर रहा है। और इसीलिए महेंद्र सिंह धोनी दीपक चहर के कम से कम 3 ओवर पावर प्ले में करा लेते हैं, नहीं तो पहले 8 ओवर में उनके 3 करा लेते हैं, क्योंकि उनका जो किरदार है इस टीम में वो नई बॉल से बॉलिंग करने का है और वो चाहते हैं कि उनको वो पूरा इस्तेमाल कर सकें। बढ़िया सेम पोजीशन यहाँ पर, बढ़िया गेंद थी ये, बीट हुए और उसके बाद ये आउट स्विंग पता चल जाता है इनके हाथ से गेंद निकलती है। बढ़िया स्विंग और विकेट कीपर भी बढ़िया पोजीशन। एक बार फिर से बीट। इतनी भी गेंदें अब तक फिंच ने खेली हैं, ये तीसरी गेंद थी। पहली इन स्विंग, फिर 2 आउट स्विंग। इंतजार कर रहे थे, अगर आप उनके पैरों को देखेंगे करीब से तो पैर हिला नहीं, गेंद को फील करने चले गए। माइंड गेम चल रहा है, उनको लगा इन स्विंगर आएगी, पीछे खड़े थे, इनके पैर भी चलते नहीं है, पीछे के पीछे डटे रहते हैं, हमेशा शॉर्ट गेंद के तलाश में होते हैं। शुरुआत में इनको बहुत तकलीफ होती है, एक बार सेट हो जाते हैं बढ़िया बल्लेबाजी करते हैं। बट यहाँ पर 2 पॉइंट आगे चल रहे हैं दीपक चहर। किस तरीके से फिनिश करना
रन दूसरे छोर से। उत्साह जरूर था वहां पे, जो होगा भी, लेकिन मूवमेंट शेप दिखता हुआ, और इसके लिए बैक कर रहे हैं सैम करन। शुरुआती दौर में दीपक चहर का साथ दे रहे हैं, अपने फॉर्मूला से नहीं हटते सीएसके। कंटिन्यूटी जो है, एक बदलाव किया जरूर है, लेकिन खेलने का तरीका, उसमें हर गेम में बदलाव नहीं दिखता। शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी इस टूर्नामेंट की अर्धशतक के साथ। किंग्स 11 पंजाब के खिलाफ मिस किया, और फिर बैक टू बैक हाफ सेंचुरीज। एक कामनेस दिखती है जिस अंदाज से देवदत्त पडिक्कल खेलते हैं। यंग ओपनर, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन, एक तरफ एक्सपीरियंस, लेकिन शॉट्स लगाते भी हैं, लेकिन उसके बीच में ऐसा लगता है कि हमेशा इन कंट्रोल है। फ्लरिश इनके पास, कमाल के अंदाज में बल्ला नीचे आता है, और रेंज ऑफ शॉट्स। अपनी हाइट का बहुत बढ़िया इस्तेमाल करते हैं। अपराइट जो हमेशा बात रहती है, बैक फ्लो भी इनका कमाल का। शुरुआत जबरदस्त, 5 मैचेस में इससे पहले 3 अर्धशतक। इससे बढ़िया आप क्या उम्मीद करोगे किसी भी यंगस्टर से। स्ट्राइक रेट अच्छा, डॉट गेंदे 36%, लेकिन जब सेट होते हैं उसे अच्छे से कवर करते हैं। और वो जो नॉक देखी थी हमने इरफान, वो चेस करते हुए इकलौता मुकाबला जो आरसीबी ने जीता था राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ, वहां पे वो मैच्योरिटी, टेम्परामेंट दिखाया था पडिक्कल ने। विराट कोहली के साथ बैटिंग कर रहे थे, एक रन चेस को बहुत अच्छे से अप्रोच किया था। बिल्कुल, देखिए आरसीबी की जो टीम है बहुत नई नई चीजें इस्तेमाल कर रही है इस साल। एरन फिंच की अगर बात करें, इस साल आईपीएल में शुरुआत मिली है पहले 3 मैचेस में, उसके बाद जल्दी आउट हुए, लेकिन स्पिन को आउट हुए 2 बार। तो यहाँ पे क्या सीएसके स्पिन का इस्तेमाल करेगी पावर प्ले में एरन फिंच के सामने? क्योंकि ये ऐसा खिलाड़ी है, एक बार सेट होता है बहुत तेज गति से रन बनाता है, चाहे वो मैदान कितना भी बड़ा हो, फिर बाद में स्पिन को अच्छा खेलता है, लेकिन शुरुआत में थोड़ा कहते हैं ना परेशानी होती है स्पिन के सामने। अपने आप से भी थोड़े और रनों की उम्मीद करेंगे एरन फिंच, उस दर्जे के खिलाड़ी हैं, लेकिन इनके खिलाफ अगर आप ऑपोजिशन टीम है, आप चाहेंगे कि गेंद थोड़ा अंदर की तरफ आए। जैसे आप देखेंगे आगे का पैर ज्यादा चलता नहीं, क्रीज में स्टक रहते हैं, और अंदर आने वाली जो गेंदें हैं वो खासा परेशान करती हैं एरन फिंच को। आप किसी भी बल्लेबाज का स्टांस देख के पता कर सकते हैं वो किस तरह से खड़ा है। अगर ये ओपन करके खड़े, इसका मतलब इन्हें परेशानी है कि अगला पैर मेरा क्रॉस न जाए, वो उनके दिमाग में चल रहा है। तो गेंदबाज को बहुत सारे क्लू मिलते हैं, आप उस तरह से गेंदबाजी का अपना प्लान कर सकते हैं। इन्हें एरन फिंच के सामने स्टंप में गेंदबाजी करें जितना हो सके। तो स्पीडोमीटर पे देखते हैं शायद 131 के आसपास। जिस तरीके से लहरा के सैम करन की गेंद निकलती है, तो उस तरीके का सीजन रहा है इनका। मुश्किल समय में इस्तेमाल किया है और इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि शायद ज़हनी तौर पे स्टीफन फ्लेमिंग ने भी कहा था कि अब करें तो करें क्या। 2 ऑलराउंडर्स बहुत अच्छा खेल रहे हैं, 2 टॉप ऑर्डर बैट्समैन फैफ और वॉटसन अच्छा खेल रहे हैं। अगर चाहे भी एक इंटरनेशनल फास्ट बॉलर लाना, आप जगह बना नहीं पा रहे। बिल्कुल बड़ा मुश्किल कर दिया है सैम करन ने टीम कॉम्बिनेशन के लिहाज से सीएसके का, क्योंकि बल्लेबाजी बढ़िया कर रहे हैं, गेंदबाजी नई गेंद से अच्छी डाल रहे हैं, बीच में अगर आखिरी में एक आधा ओवर डालना आ रहा है, वो यॉर्कर का भी बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। वेरिएशन है इनके पास। फाफ डू प्लेसी, शेन वॉटसन, आज नारायण जगदीशन आए, जिन्होंने टीएनपीएल में बहुत अच्छे सीजन्स उनके नाम रहे इंडिगो ड्रैगन्स के लिए, वहां ओपन किया था। तो क्या आज फाफ डू प्लेसी 3 पे जाएंगे? क्या कुछ बदलाव होगा वहां? इतनी खूबसूरती से सिर्फ दिशा दिखाई और टाइमिंग के साथ ये पहला चौका बटोरा है देवदत्त पडिक्कल ने। 11 बिना नुकसान 2 ओवर के बाद। जब बाल काटने आते ही नहीं तो रिस्क क्यों ले रहे हो? अर्बन कंपनी के एक्सपर्ट स्टाइलिस्ट को घर पे बुलाओ, पूरी सेफ्टी और सफाई के साथ परफेक्ट हेयर कट कराओ। अर्बन कंपनी, डाउनलोड द ऐप। Urban Company Festive Sale. Get up to 60% off. Download now. Being sophisticated is a formal affair. It's not about flaunting power. Is anything but aggressive. Sophisticated power. The new S-Cross Petrol, the refined SUV. दो रन आए थे चाहर के पहले ओवर से।
शॉट कड़क है लेकिन पीछे फील्डर। बहुत जल्द शायद दीपक चहर ज़हनी तौर पे थोड़ा पीछे करेंगे गेंदबाजी, उसके लिए यहाँ पे फील्ड ली तो थोड़ा और ट्राई कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊपर, ताकि एरन फिंच इंटरेस्टेड रहे और अगर बाहर नहीं भी जाती, एक अगर गेंद अंदर आती है तो परेशानी हो। कई बार ऐसा होता है कि अगर आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है बतौर गेंदबाज बाउंड्री लाइन पे, तो उस हिसाब से आप फील्ड गेंदबाजी करना चाहते हैं और शायद आप थोड़ा रिलैक्स भी हो जाते हैं। लेकिन बिल्कुल जतिन, मैं आपके साथ हूँ, नई गेंद है, स्विंग गेंदबाज है, आप थोड़ा और ऊपर डालिए, मिड ऑफ और कवर के बीच में से चौका जाए कोई बात नहीं, कप्तान भी बुरा नहीं मानेगा और आपको भी पता है आप गेम में रहेंगे। ये बेहतर रणनीति रहती है पारिकल के लिए। इरफान पिछोर में आपने इसकी बात भी की थी, पैड्स पे, बॉडी पे काफी स्ट्रांग, अन्यथा आप एक बहुत अच्छा तीखा बाउंसर लगाने की कोशिश करें। फेड पावर प्ले चल रहा है, ऐप डाउनलोड कीजिए, इनाम जीतिए और इस मुकाबले का लुत्फ उठाते रहिए। क्या सैटरडे गुजरा है अब तक का, बैक टू बैक ब्लॉकबस्टर्स, 2 बड़े मुकाबले और आज सिर्फ सैटरडे, कल यही कहानी होगी संडे को भी। किंग्स पंजाब के फैंस का नहीं। ये बहुत बेहतर, यहाँ पे आप चाहते हैं कि अगर चौका लग भी जाए तो कोई बात नहीं, पर आप अपने आप को ज्यादा मौका देना चाहते हैं। चहर ने क्या बढ़िया गेंदबाजी की पहली ओवर में, पहली इन स्विंग, फिर आउट स्विंग, उसके बाद दोबारा आउट स्विंग, क्रीज पे ही दोनों पैर है, कहीं पैर नहीं जा रहे, क्यों उनका जहन जो है वो इन स्विंग के लिए तैयार है। प्ले में एक बार फिर चहर की पावर, वो जो जाल बुना था दीपक चहर ने पहली ओवर से, उसे तोड़ नहीं पाए और क्या गेंदबाजी, बुल्सआई, कोई दो राय नहीं है उसमें। ये प्रॉपर विकेट है दीपक चहर की गेंदबाजी की, उनकी काबिलियत की, बढ़िया सी पोजीशन, गिर के गेंद हल्की सी अंदर आई, स्टंप्स बाहर, एरन फिंच बाहर और दीपक चहर बहुत खुश, और होना भी चाहिए, गेंदबाजी देखने में बड़ा मजा आ रहा था। 2 पे एरन फिंच आउट, 13 पे 1 रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर फैंस के लिए बीच मैदान में कैप्टन विराट कोहली, एक बड़ी पारी चाहिए आरसीबी को अपने सुपर बी से। What are you looking at, Dad? 4WD. 4 weird doodles? No! 4-wheel drive. MG Gloucester. Bookings now open. Before you buy a new car, make sure you visit the Car Dekho app. Compare cars, check out expert reviews, get the best offers and discounts. Download the Car Dekho app today. एक गेंद का सामना करना होगा, चहर की क्रीज से बाहर खड़े हैं, पैड्स पे फाइन लेग की तरफ खेला, सैम करन के लिए चेज, 2 रनों के साथ ऑफ द मार्क विराट कोहली, लेकिन सफल ओवर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 15 पे 1। Battle with a machine that's as savage as you are. Lenovo Legion. Stylish outside, savage inside. भैया सुनो ना, 1 डजन एप्पल लेके आना और मेरे लिए नींबू मिर्ची। स्मार्टफोन से लेके कार लोन पे धमाकेदार डील्स विद HDFC बैंक फेस्टिव ट्रीट्स ऑफ ऑल इज पॉसिबल। फोन निकाला खोल कर डाल एक्सप्रेस, स्लो मोशन इमोशन एक्सप्लोजन कर फटाफट।
सैम करन का दूसरा ओवर। पिछले ओवर में भी एक गेंद थी जो डाउन द लेग साइड वाइड के लिए गई। स्टंप से स्टार्ट करने की कोशिश विराट कोहली। टीम को दरकार एक और बड़ी पारी की, इसलिए जो खुद ये स्टैंडर्ड्स लगाते हैं। एक अर्शतक आया था, रन चेस थी वो राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ। छठा मुकाबला, 135 रन, 111 की स्ट्राइक रेट, नंबर 3 पे खेलते हुए। प्रोटेक्शन डीप है, स्ट्राइक पे कोहली। जिस तरीके से आप आते हैं इरफान, तो अक्सर हम बात करते हैं इस फॉर्मेट में या किसी भी फॉर्मेट में बॉडी लैंग्वेज एक खिलाड़ी का, उस पे आते हैं। लेकिन एरन फिंच, जिस प्लान की हमने बात की थी, सेटअप बेहतर। पैर देखिए, पैर कहीं भी नहीं है, जमे हुए क्रीज पे, ना आगे न पीछे। और अगर गेंद अगर इस तरह से हिलेगी तो फिर आपको दिक्कत होगी। यस, आपको बल्ले से ज्यादा कंट्रोल करना है, लेकिन आपको थोड़ी बहुत तो अच्छी पोजीशनिंग में आनी पड़ेगी। जानते हैं कि अच्छी जिप मिली ऑफ द विकेट दीपक चहर को, इसी वजह से लीड भी करवाया फिंच को। बढ़िया गेंदबाजी। स्टार्ट्स अच्छी मिली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को इस साल। देवदत्त पडिक्कल और एरन फिंच से तो जो पसंदीदा स्टार्ट रहती है विराट की, बिजी खिलाड़ी, 1s and 2s, गैप के बीच में से चौके जब गेंद नहीं होती है, थोड़ा आसानी से उनका जो फॉर्मूला है सेटल होने का, शायद वो वक्त मिला है 3 ओवर पावर प्ले में। 14 के साथ शुरुआत हुई थी, उसके बाद 2 सिंगल डिजिट स्कोर्स, फिर 72 नाबाद की नॉक आई। 8 पारियां गुजर गई थी T20 IPL में, अर्धशतक नहीं आया था। उसके बाद पिछली चेज में भी 43 बनाए, लेकिन साथ नहीं था दूसरे छोर पे। आज मौका एक बड़ी पारी का। बढ़िया गेंद यहाँ पे सैम करन की। ये अच्छी लाइन है पडिक्कल के सामने। ये दोनों बल्लेबाज ऐसे हैं, अब पडिक्कल की बात करें, कोहली की बात करें, इनके पैर से दूर रहिए। आप 4th स्टंप की लाइन इन्हें डाल सकते हैं। पिंच अलग बल्लेबाज थे, स्टंप में गेंदबाजी करना है। लेकिन विराट कोहली की आप बात कर रहे थे जतिन, पहले 3 मैच में इतना फॉर्म नजर नहीं आया, लेकिन फॉर्म पकड़ा है अभी। और जिस तरह से ये बल्लेबाज फॉर्म पकड़ता है, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखता है। चैंपियन खिलाड़ी है, चेस करना ज्यादा पसंद है। आज पहले बल्लेबाजी करें, एक बड़े स्कोर की दरकार रहेगी आरसीबी को उनके जरिए। ये लाइन बुरी नहीं है, और आप गेंद उनको आगे डालने की कोशिश करें पडिक्कल को। स्लोअर वन भी। शायद जो बॉडी लैंग्वेज है, रन चाहे ना बने हो, लेकिन इस बार जिस तरीके से एक नई ओपनिंग पार्टनरशिप में विश्वास जगाया, इन्होंने खुद कहा था कि ये स्क्वाड जो है 2016 के बाद ऐसा मालूम पड़ रहा है एज अ कैप्टन कि थोड़ा ज्यादा बेहतर बैलेंस है, तो नतीजे आए। अक्सर ये होता था या विराट के रन या AB के रन, लेकिन इस बार कॉन्ट्रीब्यूशंस आए हैं। इसी वजह से ज्यादा परेशान नहीं होंगे विराट कोहली। जब पहले 3 मैच में रन नहीं आए थे, खुद ज्यादा है। वो जानते हैं कि आरसीबी को भी वो जीत की दरकार है। वो क्वालिफाई के बारे में सोच रहे होंगे, टॉप 4 में जगह बनाने के बारे में सोच रहे होंगे। और ऐसा खिलाड़ी है जितने इतने सालों से रन बनाए, चाहे वो आरसीबी के लिए खेल रहा हो, चाहे वो भारतीय टीम के लिए खेल रहा हो, फर्क नहीं पड़ता। 3 मैच में अगर रन नहीं आए तो टीम कितना बढ़िया करती है वो ज्यादा जरूरी। 3 बार आउट हुए पहली 10 गेंदों में, जब सामने लेफ्ट आर्म पेसर होता है। ज्यादा उछाल था, स्क्वायर लेग अंपायर। जी हाँ, देखिए गति इनकी 130-132 के आसपास रहती है सैम करन की, लेकिन इनके पास अच्छा बाउंसर है। हमने देखा था मॉर्गन को किस तरह से बाउंसर में आउट किया था। बदलाव करते रहते हैं, किसी भी स्विंग गेंदबाज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी कि बल्लेबाज सिर्फ आगे का नहीं सोचे। बाउंसर डाल सकते हैं तो बैकफुट पे वो गेंद आ सकती है सर की तरफ। अच्छी सोच। 5 रन अब तक इस ओवर में। 2 के लिए पुश करेंगे, पीछे कर्ण शर्मा। जी नहीं, 1 के साथ ही ओवर समाप्त। 21 पे 1 आरसीबी। दुनिया का नंबर 1 मेयोनेज ब्रांड हेलमैन्स रियल मेयोनेज अब इंडिया में। इसका रियल टेस्ट और एक्स्ट्रा क्रीमीनेस बनाए आपके बर्गर्स, सैंडविचेस और फ्राइज को और भी डिलीशियस। Poco, everything you need, nothing you don't. क्या ढूंढ रहे हो? हाँ? वो प्याज। तीसरा ओवर पावर प्ले में दीपक चहर का।
रिस्क परसेंटेज को एकदम कम रखते हैं विराट कोहली। और यही देखा देवदत्त पडिक्कल के साथ भी आज पावर प्ले में बैटिंग का मौका मिला है, लेकिन जो इंतजार था उन बड़े रन्स का, चेज थी राजस्थान रॉयल्स, छोटे छोटे टारगेट्स बनाते इस बड़ी चेज को कंप्लीट किया था, समय लिया और उसके बाद हर जगह शॉट्स जिनकी आदत सी हो गई है सबको, और ट्रेडमार्क नॉट आउट के अंत में। और इसके बाद कहा था कभी कभी इस खेल से आप इतना प्यार करते हैं लेकिन कभी कभी थोड़ा गुस्सा भी आता है कि आप अच्छा खेल रहे हैं लेकिन रन नहीं आ रहे। अच्छा तो ऐसा लगा था पहले भी मैचेस में खेले थे, लेकिन नंबर 3 पे उन मैचेस में थोड़ी दरकार अलग थी। विराट कोहली 751 रन, रोहित 717, 676 धवन, ये सबसे ज्यादा रन है चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ। तो ऑलमोस्ट जो इंडिया के टॉप 3 हैं उन तीनों को सीएसके का बॉलिंग ऑर्डर बड़ा पसंद है। और आज भी दरकार वही रहेगी। और बढ़िया है, आपने जब पहली गेंद ही देखी होगी क्रीज के आगे खड़े रह रहे हैं, वो स्विंग को काउंटर करना चाहते हैं। इस वजह से जितना आगे आप खड़े रहेंगे गेंद को लहराने का समय कम मिलेगा। अच्छी रणनीति, और इसी वजह से गेंदबाज ने भी अपना लेंथ थोड़ा पीछे किया है। जानते हैं कि अगर ज्यादा जो उनकी लेंथ है आगे की तरफ डालने की कोशिश करेंगे तो ओवर पिच हो सकती है। ये छोटी छोटी जो प्रैक्टिस है वो आप बतौर बल्लेबाज बतौर गेंदबाज आप चलाते रहते हैं। कौन ज्यादा उसका फायदा उठाता है वो देखना होगा। यहाँ पे कभी मैं मानता हूं कि अगर बल्लेबाज थोड़ा आगे खड़ा है तो आप बतौर गेंदबाज थोड़ा पीछे से गेंदबाजी कर सकते हैं ताकि गेंद को और लहरा सके। दादा आ गए वापस, आवाज ये भी काफी गूंजी लेकिन सीधा फील्डर के पास। सिर्फ एक ही बार आउट हुए दीपक चहर के खिलाफ। इस टूर्नामेंट में पेसर्स ने किस तरीके से बॉलिंग की है। विराट कोहली शफल अक्रॉस करके गेंद को रीच करने की कोशिश तो करें लेकिन कंसिस्टेंटली इरफान एक तो ऊपर गेंदबाजी नहीं दी किसी भी ड्राइव के लिए, और लगातार 6, 7वें स्टंप की लाइन पे गेंदबाजी। ये अक्सर प्लान रहता है विराट कोहली के सामने। आप चाहते हैं कि ऑन दी अप खेले ऑफ साइड पे, आप इससे ज्यादा शॉट होना नहीं चाहते। लाइन आप 5वें 6ठे स्टंप पे रखना चाहते हैं, और अभी तक तो बहुत बढ़िया प्लानिंग के साथ की है गेंदबाजी। लेकिन अगर ये लेंथ मिलेगी बैकफुट पे तो फिर ज्यादा विराट कोहली कंफर्टेबल नजर आते हैं, थोड़ा और आगे कर सकते हैं बतौर गेंदबाज। लेकिन विराट कोहली भी चैंपियन खिलाड़ी है, क्या कर रहे हैं ऑफ स्टंप के बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि उन्हें पता है कि पैर पे जब गेंद मिलती है बहुत ज्यादा मिस नहीं करते, तो कवर करके ऑफ स्टंप के बाहर वो लाइन को अपनी बॉडी पोजीशन से कवर करना चाहते कि जितने भी रन है अधिकतम जो रन है पेस के खिलाफ वो ऑन साइड पे हैं, जिसकी आप बात करे थे। अगर पैड्स पे गेंदबाजी करेंगे तो फिर अक्सर वही नतीजा, सिंगल्स डबल्स काफी आप देखेंगे ऑन द पैड्स, लेकिन ऑफ साइड पे उन्हें खामोश रखने की कोशिश। अच्छा ओवर आया अब तक, सिर्फ 3 सिंगल्स, और चौथे सिंगल के साथ इस ओवर को करेंगे समाप्त। अच्छी ओपनिंग स्पेल दीपक चहर की, 25 पे आरसीबी। ये मैं कर लेता हूँ, तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो। Dream 11. Make your team now. They put on Rohit Sharma and Dwayne Smith. Oh, there's a run out. Surely, what is happening here? और ये नजर घटी दुर्घटना घटी। इसीलिए देखिए क्रिकेट ओनली विद लेंस कार्ड ब्लू कंप्यूटर ग्लासेस। शार्दुल ठाकुर आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, थोड़ा सा कदमों का इस्तेमाल किया, हवा में जरूर थी गेंद लेकिन गैप में देवदत्त पडिक्कल खोल रहे हैं हाथ। अब कुछ समय बिता लिया है, थोड़ा सा दबाव डालने की कोशिश है वापस गेंदबाजों के ऊपर। पावर प्ले की आखिरी ओवर डाल लिया है शार्दुल ठाकुर, और पहली गेंद पे बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, अपने आप को रूम दिया,
बढ़िया हाथ चलते हैं देवदत्त पडिक्कल के, कलाइयों का इस्तेमाल भी बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी बल्लेबाजी में हाथ बहुत रिलैक्स रहते हैं, इसी वजह से वो बैट बहुत बढ़िया तरीके से चलता है और रीच बढ़ती है इनकी। अच्छे अंदाज से खेला वहां पे शार्दुल ठाकुर, और यही फर्क है कि जब दीपक चहर गेंद कर रहे थे तो उनका गेंद हवा में लहरा रहा था। शार्दुल अभी भी खोज रहे हैं कि गेंद हवा में कुछ शरारत करे या ऑफ द पिच कुछ करे। कितना आसान नहीं होता है। कौन सा कप्तान ज्यादा जरूरी है अपने साइड के चांसेस के लिए, महेंद्र सिंह धोनी या विराट कोहली? गुरु ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपनी टीम के लिए या शिष्य विराट कोहली? दोनों, देखो दोनों बड़े प्लेयर हैं और धोनी ये जानते हैं सब लोग। किरण भाई एक का जवाब, इरफान से भी मैं एक ही का जवाब मांगूंगा। मैं बताता हूँ 50-50। डिप्लोमेटिक नहीं किरण भाई। देखो धोनी आज ये मैच जीतना बहुत जरूरी है और ये कप्तानी तो जबरदस्त करते हैं, हमेशा कुछ नई नई चीजें हरकतें लेके आते हैं। वरना आज शुरुआत की दीपक चहर के साथ ये लेग की अपील की थी, पर थोड़ी पिच बाहर हुई थी, लेग साइड के बाहर, कोई मौका नहीं था। शार्दुल ठाकुर हमेशा गेम में रहते हैं, अपील करते रहते हैं और गेंदबाजी बढ़िया करते रहते हैं। उनका एटीट्यूड मुझे बहुत पसंद है। कभी कभी चौके छक्के भी खा जाते पर कम बैक बढ़िया करते हैं। और ये कप्तान देते हैं और इस समय कदमों का इस्तेमाल करके विराट कोहली गेम को कंट्रोल कर रहे हैं। क्या कमाल का शॉट, अथॉरिटी अपना दिखाते हुए क्रीज पे विराट कोहली, चहलकदमी। चौका आया था पहली गेंद पे शार्दुल ठाकुर की इस ओवर में और अब आया चौथी गेंद पे। बहुत ही बढ़िया शॉट, ऑन दी अप लगाया ये शॉट। चहलकदमी करने की सोच थी कि गेंद के ऊपर पहुंचे नहीं, उसके बाद भी अच्छा शॉट। ये क्लास है विराट कोहली का। देखना कि शार्दुल ठाकुर किस तरीके से वापसी करते हैं, क्या शॉर्ट पिच गेंद डालेंगे और तैयार रहेंगे विराट कोहली। अच्छी क्रिकेट चौका मारने के बाद सिंगल। फास्ट बॉलर के खिलाफ आउट हुए हैं इस साल, फास्ट बॉलर के खिलाफ आउट हुए हैं इस साल। ऑफ साइड की जो गेंदें हैं जहां पे खेला था तो लेग साइड पे खींचना चाहते थे, ये करते हैं बार बार, हमने इन्हें ये करते हुए देखा है, लेकिन वहां पे आउट भी हुए। थोड़ी अगर गेंद अगर एक और लाइन अंदर हो तो आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन अगर गेंदबाज बार बार वो लाइन डालेगा तो सामने की तरफ। और कभी कभी ये होता है जब आप बहुत वक्त के बाद खेल रहे हैं, आप जोर लगाना चाहते हैं, वहां पे आउट होते हैं। चैंपियन खिलाड़ी इस गेम को बेहतर जरूर करेगा। ये शायद वाइड गेंद, जी हाँ, शरीर की तरफ नहीं थी, लेग साइड तो बहुत बाहर चली गई। ऐसा लगता है किरण भाई थोड़ा सा टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं देवदत्त पडिक्कल को कि शॉर्ट पिच गेंदबाजी से। बिल्कुल पावर प्ले चल रहा है, तो बिल्कुल यहाँ पे एक आखिरी गेंद है, तो कोशिश करेंगे रन बटोरने की। यहाँ पर आपने देखा तो ये बड़े दोनों कप्तान हैं और क्या सर्विस MS धोनी ने इंडियन टीम को, और विराट कोहली तो अभी भी दे रहा है। बढ़िया गेंद, अच्छी वापसी। 36 पे 1, पावर प्ले हुआ समाप्त।
ब्रावो आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और ये सबसे बढ़िया पावर प्ले रहा है चेन्नई के लिए रन रोकने के लिए सबसे कम रन दिए पॉल राइफर और अनिल चौधरी स्टार्ट करते हुए प्रोसीडिंग्स और पहले 6 ओवर में किस तरीके से गेंदबाजी रही बॉल थोड़ा सा स्विंग किया दीपक चाहर का देवदत्त पडिक्कल अच्छे अंदाज से बल्लेबाजी कर रहे हैं और फिर बीट किया वहां पे आगे गेंद डाल के अरुण फिंच को 3 चौके लगे इन पावर प्ले में और कदमों का इस्तेमाल करके एक अथॉरिटी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं विराट कोहली बॉडी लैंग्वेज लग रही है कि आज होगा बिल्कुल आज उनको एक अच्छी बारी खेलनी पड़ेगी टॉस जीत के बिल्कुल आज उनको एक अच्छी बारी खेलनी पड़ेगी टॉस जीत के बैटिंग करने का निर्णय लिया है उसके सामने धोनी शुरुआत है अच्छी शुरुआत की है चेन्नई ने उनके बॉलर्स ने एक विकेट चटकाई ये बड़ी विकेट थी अरुण फिंच की ने विराट कोहली को स्ट्राइक रेट उनका उनके खिलाफ 157 का है भाप लेते हैं कि ये गेंदबाज किस किस्म की गेंद डालता है टाटा एल्ट्रोज हैचबैक का आरसीबी भी यही चाहेगी कि सुरक्षित अंदाज में एक बड़ा स्कोरबोर्ड दर्ज करे क्योंकि कप्तान कोहली खड़े हुए बीच में इनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद आरसीबी को बहुत बढ़िया जो हाथ पैर चल रहे आज विराट कोहली के नजर आ रहे हैं विराट कोहली ने कड़क कवर ड्राइव क्लास विराट कोहली और गेंद डालोगे स्लो गेंद थी ऑफ कटर जैसी पूरा फायदा और गेंद डालोगे स्लो गेंद थी ऑफ कटर जैसी पूरा फायदा उठाया बढ़िया पोजीशन बैट तो उनकी बढ़िया आती है कवर्स बहुत मजा आया और ये अच्छी बारी खेलेंगे तो बहुत मजा आएगा देखने में अब ये जब शॉट खेलते हैं स्टंप्स के बीच में से आके गेंद को अपने करीब आने देते हैं तो साफ दृश्य नजर आता है कि ये खिलाड़ी उसको बिल्कुल पढ़ रहे हैं बिल्कुल थोड़ी देर पहले ही बात कर रहे थे कि जो गेंदबाज है वो कोशिश कर रहा है कि इन्हें कवर्स पे खेल लगाने की आउट हुए लेग साइड में खेलने की कोशिश थी जो चौका लगाया था वो धीमी गति की गेंद थी और उसके खिलाफ देखिए स्ट्राइक रेट 137 का हो जाता है तो बहुत जल्दी भाप लेते हैं कि जब गेंदबाज धीमी गति की गेंद डालने की कोशिश करता है या अपनी गति में परिवर्तन लाने की कोशिश करता है मिश्रण करता है गेंदबाज पता चलता है विराट कोहली को एक कदम आगे रहने की कोशिश रहती है और रहते भी हैं लास्ट मोमेंट तक गेंदबाज का हाथ देखते रहे तो विराट काबिल तो है ही बल्लेबाजी में लेकिन हाँ थोड़ी मेहनत करनी होगी वाटसन को की भी विराट का जो बैलेंस है जब आप पोजीशन में आते हैं शॉट करने के लिए बहुत ही बढ़िया है तो शॉर्ट गेंद भी बढ़िया खेलते हैं कवर ड्राइव भी बढ़िया खेलते हैं तो प्ले में दिख रहे हैं अच्छी शुरुआत की तलाश में अच्छी तो
we're not far off putting a full game together. It does seem to be the keenness to play the all-rounders that's cost you your place, and also Imran Tahir's. They're the sort of obvious choices, the two of you. Is it difficult hanging out on the bench? Not, you've played once, but it must be very frustrating. Yeah, of course it is. You know that coming to the IPL, though, it's tough to get a game. Obviously, there's only 4 spots for overseas players, and as you mentioned, the two all-rounders been going great guns. So obviously, great to have Bravo back the last few games, and he's been the wicket straight away. So we know how important player he is for us, and I guess just about getting that balance right, mixing with the Indian players. Josh, it's KP. How are you training during the games or in between games? How do you keep yourself in tip-top condition so that when you do get the nod, you execute? Yeah, that's probably the toughest thing, I think, KP. It's obviously doing a lot of fitness and strength stuff outside the games, and to be fair, the games are quite spread out, so we've always got at least one training, maybe 2 in between the matches to top up on our skills and do some really good work in the net. So we've obviously been doing that, and that keeps you ready to go when you do get the call. And what's more important, your skill work or the work in the gym? Definitely the skill work. It's probably more fun as well, so yeah, definitely the skill work. You've got some very interesting leaders in your camp, haven't you? We obviously know about MS, but Faf du Plessis as well, guys who have had enormous success. It must be interesting for you to work with different people from those you're used to in Australia. Yeah, that's probably been one of the best things for me. I think particularly in this Chennai group, the experience is enormous, and as you mentioned, a lot of bases covered from different countries. So it's been really good to see how MS goes about it, but not only him, as you mentioned, Faf and Wadar as well. So it's just a different perspective on things, I guess, from what I'm used to at Cricket Australia, and yeah, always learning. So it's been great. Bases covered from different countries, so it's been really good to see. The bow, really. I'm really happy with how I'm bowling up front. It's just having another option there at the end. So it's been good fun practicing a few different things and seeing what works. Be as honest as you dare. When you see the new ball swing and bounce and carry, you must wish you were out there. Yeah, it'd be good fun. It's not bad bowling here in Dubai. So yeah, the wickets have been really good. It's great to talk to you. We know your guys need to get back on the bike, so to speak, so I didn't trouble you with that. Good luck. We hope you play soon, Josh. Thanks for your time. Thanks, guys. Cheers. Yeah, Josh Hazlewood, one of the beauties. He's a farmer. He's a country lad. I love the way when they interview them, they try and tiptoe around the hard-hitting questions. Yeah. You think you should be playing, don't you, Josh? Yeah. Well done, up in the air well done, and boys. Over the infield, just for the single to Faf du Plessis. 5 off the over. 55 for 1 after 9. Sanjay's up on the dance floor, and you may have spotted something with Virat Kohli with his offside strokes. Yeah, today's innings that he's playing, and so far the innings that he's played in the tournament so far, I can clearly make a difference. Wherein he was looking to play a lot on the onside in the earlier matches, and if you see the runs scored by him, if you can play out that area where he scored a lot of runs. Now today he's looking to play through the offside a lot more. The cover drives which he likes to play the most, then dropping it through cover point, then also working the ball towards the short third area, and this is his strength. As opposed to this, what he was doing earlier, he was looking to get inside or get onto off stump very early in his innings, and then looking to score through the onside. If you look, literally, 60% of his runs are being scored on the onside. But today's approach is a bit different, and I believe that this is something where Virat Kohli excels quite a lot, and this is something that he should continue. Not look to go too far across his off stump and play everything through the onside, but he's too good a player to miss out scoring runs through the offside as well. Back on the back foot, as also through the cover region, which is one of his best shot and his real strength. Very good, Sanjay. Yeah, and I think that demonstrates too that
What they say, Swanee, if you're going across and you can actually manipulate the field, hit it down to third man, hit it to backward square or backward point, you're in pretty good nick. Absolutely. Time to continue. I hope he's saying, calm, mate, it's a good job. Your mate's on fire out there. There we have the Dream 11 champion fans and the pleasure and the comfort of their own home. No line or queue for the bathroom. Got some great dance moves going on there as well. Oh, up in the air. He's got enough, I think. Oh, yeah. Cracker from Particle. So, great use of the feet there from Particle. Look at the way that he just, easy, flick of the wrist. He's quite a tall lad. Not overly muscular or too strong. 50 partnership. Stop. That's well bowled by Karan Sharma. He saw him coming. Devdutt Padikkal, and is one of the spinner's real armory as to bowl the fuller ball, the Yorker length ball, so that he doesn't get under it. So someone can't get underneath, and that's where you can bowl if you're a finger spinner. Yours. You can bowl a ball that's almost like a flying saucer, so it doesn't dip. No. 10 overs gone. RCB are 65 for 1. Come on, not easy, not easy. आजा. Oh yes, out हो गया. बाउंड्री है. अरे खड़ूस के स्कूटर पे लगना आउट है. यार चौका है. कितनी बार बताएंगे? तो फुट. बैट तो मेरा है. नहीं तो धोनी होगा ना, घर का होगा. जा. ड्रीम 11. मामा शॉपिंग के लिए चाहिए वन टाइम पासवर्ड. हर बार नया आता है सिर्फ आपके फोन पर. ऑनलाइन शॉपिंग को दी है सेफ्टी पूरी, ताकि इंडिया को रहे बस सही गिफ्ट चुनने की बारी. मास्टर कार्ड. क्योंकि कुछ खुशियां हैं प्राइसलेस. Shuttle tackle to continue. Brian Lara. Oh, up in the air. Will it carry? No, I thought he might have got it. A bit thicker than that. Graham Swan out, and the man that scored just shy of 12,000 test runs, Mr. Brian Charles Lara, the Prince of Trinidad, steps in. How are you? Welcome. What's your assessment so far, the first 10 overs? Well, I see teams are sort of throttling back from aiming at 200, and at this present position, you'd think a good score for the Royals would be roughly around 175. So it's a good start. They got wickets in hand. Padikkal is looking good. Up in the air, should be out. Faf, he doesn't drop him, don't worry about that. Faf du Plessis takes an easy catch, and Padikkal departs for 33. Shardul Thakur continuing his impressive run, bowling well, mixing those slow deliveries really well, and here again, cross-seam delivery. Padikkal looking to accelerate. That was his intent since the last over, and Faf du Plessis doesn't miss those. Big wicket was CSK. Devdutt Padikkal gone for 33. It's 66 for 2. फास्ट. रजत बॉलिंग कर. अरे अभी 3 बॉल बाकी है. बुम बुम, यहाँ फास्ट नहीं चलता है. तेरा मिनी ओवर. चल कोने कट ले. ड्रीम 11.
holding on strike, so they managed to cross the balls in the air. And finally we see going towards the onside of the ball, so it's something that he'll have to work on. And if he wants to get the ball traveling down the ground with any sort of power, your right foot's got to be going to the line of the ball instead of pulling away. Pulling away, it's always that opportunity of not getting the ball off the middle of the bat, skying it. ABD will be looking forward first to face Quicks to get set. No doubt that they'll be looking to bowl spin on him straight away. That's a pretty impressive record. 38 50 plus scores, 4,500 runs and 160 matches in his IPL career. Little bit of shape, and ABD has gone packing. Brilliantly bowled by Shardul Thakur. He can bowl those outswingers so well. This is his real strength. This is what he has done a lot on the first class circuit. And again gets a big man. What a big wicket that is. The ball slightly nipping away from the right-hander. Dhoni makes no mistake. And AB de Villiers goes without scoring. 67 for 3. RCB in trouble. Credit card bill is here, need OTP to clear. Download Cred and you'll be Let's just do a simple voiceover like download Cred. Download Cred. Get rewards for paying your credit card bills. Cred. I'm too big for this, guys, anyway. Next up, unlike 67 for 3, and AB de Villiers just been dismissed with a nice little leg cutter off the wicket for a duck. Washington Sundar comes to the crease. We'll take a short little break, come back shortly. 67 for 3 after 11. I've always wanted to do that. I've always wanted to do that. Always wanted to do that. भैया सुनो ना, एक डजन एप्पल लेके आना और मेरे लिए नींबू मिर्ची। स्मार्टफोन से लेके कार लोन पे धमाकेदार डील्स with HDFC Bank festive treats of all is possible. Optimum Nutrition Gold Standard, 100% whey protein, supports muscle recovery and gets you back on track. Together, we will be better than before. Welcome back. Jadeja is into the attack. The advantage of getting Jadeja back is coming back to the wicket of AB de Villiers. A thick outside edge, healthy edge. And isn't Shardul Thakur ecstatic? And why shouldn't he be? Having picked up one of the best batsmen in the world. What satisfaction it must have been for him. I'm going to come to you, Brian, on this. Like you've been in this position numerous times before. I mean, how do you get through this and get a good score? I think it's important that Virat realize that he's got to play a big role. That's a close one. Don't look like they're going upstairs.
just getting back to your question, he has to realize that he's the man. So in these situations, you tend to pick bowlers to go big, you know, and what I'm seeing him doing is that I think that he's going to go the other way. He's going to try to turn over the strike, pick up singles. Got a bit of glove in it. And I feel maybe he needs to pick up boundaries, right? He can't shut the game down for 4 or 5 overs, which is exactly what I think he's going to do. He's going to shut the game down, and then their total is going to go down and down. I mean, at present, it looks, if they get 150, they'd be lucky. Okay. Well, that's the end of the over. It might come back that next over. 69 for 3 after 12. It's funny when you talk about social media, gentlemen, and we've got a lot of people watching the Select Dugout, and we love to do the wicket alerts and the big over alerts. And have a look at this, would you? Select Dugout, please, would you be kind to call for a wicket alert now, specifically Padikol's wicket? And absolutely straight after this, what happened? So, casual thoughts. There's nothing casual about that. That was absolute spot-on thoughts, and well done. So, we might put you in the tally, I think. Maybe there might be Scotty Styris' alias. Amazing. So, casual thoughts. Good job for you. Keep the keep the text coming in via Twitter, social media. Love seeing the tweets. All right, back to the game. 69 for 3. So 150 BC you'd be happy with? No, what I'm saying is to get there. What I'm saying is that Kohli's got to play. He's got to play like Kohli normally plays. He's got to target nearly bowlers that he can go big against and do the job himself. I think the rotating of strike, you're going to see there are going to be a lot of dot balls, and then he's going to find himself trapped where yeah, this is what I want to see. I want to see a lot more twos. If you're going to get 10 runs in the over and you can get 5 twos, that's good, but he's got to do the majority of the scoring, the majority of facing of deliveries, you know. 28 off 24 deliveries for Virat Kohli. Yes! So 9/10 runs and over here will get him 140 close to 150. Which captain's more important in their side's chances? Well, you voted. MSD's in favour at the moment. Up in the air. Oh, it's over. Good shot. Washington Sundar. He's strong enough. Yeah, Washington Sundar generally plays as an off spinner in the side, but he's no mark with the bat, has got tremendous ability. Bats top of the order for his first class team. Really strong hitter of a cricket ball. Not only against spin, but he can tonk it against pace as well. And CSK would be aware of it because a lot of these players play in Chennai. That's where he comes from. That's a better length to bowl to him, because if you give him in his arc, he won't back down. Yeah, it's a beautiful flow of the bat. Easy. Nice big long strike. A tall lad, Washington Sundar. Powerful striker. Get out of the way, boys. Good one for RCB, 12 off it, 81 for 3, 7 overs to go. अरे हिसाब सिंपल हो गया। यस, खाता बुक क्यूआर पेमेंट, ये सब ऐप से पेमेंट एक्सेप्ट करता है और फुल हिसाब को एक जगह दिखाता है। खाता बुक, बिजनेस हुआ इजी मैन।
मामा शॉपिंग के लिए चाहिए वन टाइम पासवर्ड, हर बार नया आता है सिर्फ आपके फोन पर। ऑनलाइन शॉपिंग को दी है सेफ्टी पूरी, ताकि इंडिया को रहे बस सही गिफ्ट चुनने की वारी। मास्टर कार्ड, क्योंकि कुछ खुशियां हैं प्राइसलेस। My name is Virat Kohli and I write my success story myself. Philips Signature Series Trimmer, limited Virat Kohli edition for the self-made. Welcome back, and Virat Kohli's strike rate. He's currently faced 26 deliveries, so gentlemen, get ready. After he faces 4 more. Catch, how was that? Today's with a very high peel pitch. I thought I heard 2 sounds there, but they're not going to go upstairs, so... Well, they're running out of time just now. Well, I don't get that, how they are so keen to appeal, then they just don't go upstairs. What did they say, Sanjay? What Dhoni said is that भाई मुझे तो time दे दे, which means that Jadeja is known to get through his overs very, very quickly, and he wasn't even waiting for his wicket keeper to get back into position. And that's what Dhoni was telling him, that please, at least let me get back into the position. Okay, Aram se, that's right. Very good. Yeah, this is a real advantage of Jadeja, that whenever his team is at top, it really gets through the over quickly. Nothing there really. MS not interested. And in the last over, what we saw when Jadeja was bowling to the left-hander, he delivered certain balls very close to the stumps from bowling around the wicket. Now, this is something that Jadeja doesn't do quite often. For right-hander, obviously he'll come slightly wider on the crease, as he is doing right now, center of the crease. For the left-hander, whenever he's done, and so far in this innings, he has used the angle really well. Couple of balls, like see, now here, so close to the stump. He doesn't want to give that angle to the left-hander to play the cut shot, which Brian was saying that can be played through the point and third man region. Fabulous use of the crease from Ravindra Jadeja. 14 gone, it's 86 for 3. Here's your chance to be part of a family like no other. Because we're celebrating 3 years of living the Jeep life. With festive benefits of up to 80,000 rupees for you. Join the Jeep life today. बिजनेस भाई, डोमेन नेम ले लिया, सही है ना? ये तो बस पहली चाल है। क्या भाई? जो पहली चाल पे रुका वो हारा। डोमेन नेम पहली चाल है, फिर वेबसाइट बनाओ, ईमेल लो, तब बात बनेगी। गो डैडी, कंप्लीट ऑनलाइन बिजनेस सोल्यूशन। Sam Curran, ball in hand. He's a wicket taker normally, so up in the air. I think it's going to run all the way, and it has 6. So Virat Kohli with those big thick edges, top edge, Sam Curran's pace, 6 in the kitty. That's not where he was aiming to go after. Getting a top edge, showing real intent. What it shows that is now going for the big overs. RCB requires some big overs out here. Well, we showed that graphic last over about when Kohli gets to 30 balls faced, his strike rate goes from about 115 up to about 177. Currently striking about 130. With smart batting.
There we go. He picks a boundary up in the first ball, 6. Wise to see if he can get 10 to 12 runs by not taking any more chances. He's got to be there, and this is pretty good. And he's got a good strike rate after facing 30 balls, and he's in that position now, but still they don't have much batting to come, and he would like to stay there. What can Curran do? 58 on his back. Nick! Got him! Damn, I should have gone for the wicket alert. I wanted it. Very good from Sam Curran. I said he's a wicket taker. Oh, so tempted to push that button and light the place up in red, but I wussed it out. Washington Sundar. Just watch a little bit of nibble. May have been that side seamer, not a cross seamer, but halfway between. Easy catch from Dhoni, like shelling peas. And Sam Curran gets the big breakthrough. It's always better to be on the aggressive side, Binga, not on the cautious side. Washington Sundar gone for 10. It's 93 for 4. Well, we're sort of saying off air, we've got these little buttons here we can push that takes our voice away. We could talk to each other, and I was just talking amongst each other, and we're thinking big wicket alerts or big over alerts, weren't we? And I was so tempted to do one. Well, what's happened, what's actually spoiled the fun is that earlier we were just doing it for fun. After that, this competition element has kicked in, and now they've started to rate us. So being the proud cricketers that we are, we do not want to lose, we want to win. And that's why we are playing percentages. You know, we are not taking enough risks. We are just playing it very conservatively the way CSK is doing at the moment. Playing percentages. I'm not worried about percentages. I want to go and wiggle it when I think there's a wicket. That's why I'm playing. So, Dubey. Will Sam Curran be able to pick up 2 in the 1 over? Left-hander again. Will there be a slip-in? That's the question. Will there be a wicket alert? On the leg, so. But BC, it was a good wicket from Sam Curran. As long as he gets Virat Kohli off strike, you just felt that Washington Sundar is going to play a shot. Somebody's got to go, and he feels that pressure that the captain has to stay. Virat has to be here, so I have to keep that scoring ticking over. Even if I don't get a boundary, I get the strike back to him. So it was always under pressure to perform. Yeah, look, it's been good lengths tonight for the CSK Pacers. And look at this graphic here. You see those white balls that are glowing, pulsating. Beautiful length. 69 is the batsman's strike rate when they've hit that good length. And that shows me that those 3 in particular that are on the cusp of the slot and length with that newish ball, perfect. Perfect length, great line, and a nice cluster of deliveries. So 1 ball left, 9 off the over end of wicket. It's been a good one for CSK. Sam Curran with the breakthrough, 95 for 4 after 15. 5 to go. टिकट ये मैं कर लेता हूँ. तब तक आप ड्रीम 11 पे टीम बना लो. Dream 11. Make your team now. My OTP has come. 123651. Credit card bill is done. What is this? Let's do a simple voiceover like download cred. Download cred. Get rewards for paying your credit card bills. Cred. Balls to go. Kohli needs to get moving. Karan Sharma, his final over. Still happy to pick up his ones and allow his partner to do a lot of the work. Shivam Dubey. A
don't know if you replace, heard. Washington Sundar. Just before we came on air, this just made me chuckle. This is just one of those strange things I noticed and no one else seems to. The song that was playing in the ground between the overs was "Come on, feel the noise," and there's no one there. All the noise is in this dugout. That's a good thing. I know. They get to hear our opinions more, Swanee. It's just, it just made me giggle. Who's the song playing for? What have you noticed in the last 5 overs, Brian? You're the only remaining member here out of the last group, with the intent that we've seen from RCB's batsmen. I think it's similar to the last game where Virat Kohli was left on his own to chase a big total, which was, became impossible after time. I find here as well, he's put under a lot of pressure. He's trying to pick up a boundary every over. He's asking his partner to run quickly between the wickets. But I think he's pretty much trying to set up for a big 2 overs, a big 3 overs. If he can, control the strike for 18 balls, see if he can get somewhere around 40 runs in it, I think he'd be happy. He is very wary of the fact that if he leaves now, it's not much to come after. He's going to be asking a lot of Dubé to do all the striking, so he's depending on those last 2 to 3 overs to come out big for him. This has been a ground where big scores have been the norm, but they have started to just slide ever so slightly. So whilst we can all sit here and say maybe RCB are well behind where they'd want to be, if they can get to that 160, and it's going to take some batting in 4 overs to get up near that mark. And the way he's batting, it suggests that perhaps we're way overestimating what that number might be that he's happy with. I've not seen much in the pitch to suggest it's not a decent wicket, though. It's coming onto the bat beautifully. Just Virat Kohli looks like he's having a net compared to everyone else. That's smashed. He's got a lot of power, Shivam Dubé. And the over needed it because 8 runs from it and the 100 up for RCB as well. 103 for 4. And it will also be the See It Tyres strategic timeout. Well, our chat so far has been around RCB's score and what they think they might like to get to, and some maybe aggression we're going to see, you would hope, in the next 24 deliveries. But it has been CSK's bowlers that have been very good for skipper MS Dhoni. He's mixed them up well. Particularly like, once again, what Shardul Thakur has done, picking up those 2 wickets, including the massive scalp of AB de Villiers for a duck. And the quick bowlers are the ones who have picked up the wickets on this pitch. And look at the length in particular that they have bowled. That's right, it's all been good lengths, not too full. This ball to AB de Villiers is a beauty. It's a cross seamer, but it just shaked away with the flick of the wrist. It highlights it too. Only a strike rate of 69 when CSK have bowled a good length. And the best part about that is most of their deliveries have been in that region. So we can all sit here and say, well, look, maybe RCB haven't done much, but CSK have not allowed them to also get free deliveries to put away to the boundary. So 8 and over from here, 135. 10 and over, 143. Personally, I think both of those scores are under par. They need to be higher than that. So if that's the case, if 10 and over is 143, what realistically from here, being 4 down, but Kohli in and going, can they get to? 150. I think 150 is attainable. I think they're both going to have to be aggressive and get a bit of luck along the way, but they should definitely look for that. Most definitely. There are two
batsmen out there that are easily clear the boundary. Dubé is known to be a big hitter of the ball. If he gets set, getting a 16 run over or a 20 run over is all within his reach. So
Final over for Sam Curran, who's done another good job. Picked up Washington Sundar with that catch behind to the skipper Dhoni. I think this is going to be a massive over. Power. And I think he's got enough of it as well. No, parried over. Jagadeesan down at long off. There's a big start to the over. He's usually a keeper. So that is a tough spot to field down at long off when you're not used to it. Most definitely. And you would think that, you know, one of the better fielders would be out there in those positions, mid-on and mid-off on the boundary. To have your standby wicket-keeper there. Oh, he should have done better. At first, I thought we'd been a bit harsh and should have done better. Completely with you, Brian. That should be Faf du Plessis at long off. He's an expert down there. Well, part of it too is Bravo standing there at short fine leg. Dwayne Bravo, very good athlete. I know he's getting a little older, but he's still an excellent athlete who moves well. Is he on the rope? Your Dean Jones and your big bugbear, Swanee? Yeah, it absolutely pains me. I think, no, he's not. So he's gone in too far and then he's travelling backwards. Had he been back in the right place, as Dino used to say, as soon as it's hit, you check your feet, you check where you are, and you focus on the ball. You could have taken that Australian style. The reverse cup hands, no problem. Sam Curran would have had another wicket. All hell, Sam Curran. As it is, he's gone for 6. 10 and over now, 151. I still believe they need more than that. They're wide. Sometimes you've got to be happy with what you get, and I think 151 is something they'd be happy with. 50 for Kohli, that pull shot just swivelling. And you see the emotion. He always plays with that emotion. AB de Villiers up the back. Did not contribute tonight. He's had a good tournament. What would RCB give for Kohli to be 80 not out at the end here? And there is 6 more of them. Unacademy cracking 6. It's just savage from Kohli. As I said before, he's not a big man, he's a small guy. It's a light bat he uses. The hand speed here was brilliant. Look at this. Booshka. To keep going. When you get an opportunity for a big over, you have to take it. 14 off 3 balls. It's nicely bowled. Kohli immediately says come back for 2. And his innings tonight has been well paced. He's shown us that he can hit all around the ground, that MS Dhoni had a deep backward point in place, so he's decided to avoid that region and pretty much spread it relatively evenly. Now the 270, 300 degrees around the field. Just wonder too, I mean, the partnership 41 off 22. The decision to send Washington Sundar in front of Shivam Dubé, who's also a left-hander, so the left-handed argument doesn't work in this case. Do you like it? Or hindsight says it's a mistake, but obviously you never know what's going on behind closed doors at their training sessions, what have you. This time it's on the leg side. It might be out, is it? It's another one. Elchos super striker. Suddenly Kohli is. That has been timed to perfection. This is the time of the game that he was looking for. Get it down past 17 overs. Just give me the last 3 overs to really explode. I think Scotty, they're still looking at 160 possibly. It's a really good shot, isn't it, down the wicket, picking up. It's always one of my favourites to watch. That's right, get those arms up in the air, that's 6. Chaka!
fieldsman. He stayed away from that area. It's really well bowled. 4 runs coming from the over. Exactly what you wanted, Brian. 141 for 4. Baby, you're my CVV. I am your OTP. When we come together, the payment is easy. Download Cred. Seriously? Let's just do a simple voiceover like download Cred. Download Cred. Get rewards for paying your credit card bills. Cred. Download Cred, baby. Download Cred. My name is Virat Kohli, and I write my success story myself. Philips Signature Series Trimmer. Limited Virat Kohli edition for the self-made. Two overs to go. Virat Kohli starting to put some real pressure on the bowlers. And there's another one. Yes. Wow, what a swing of the bat. Beautiful. Dream 11 game changer of the match. This innings starting to be from Kohli. Amazing, amazing shot. It's just poetry in motion. Dances down the wicket, head so still. Watch when he hits the ball here. He moves down the wicket and then gets in a solid position, uses all the momentum, crunches it for 6. 2 people in the world I've always enjoyed watching bat, and this guy's one of them. Yes. I'm not going to embarrass the other bloke by saying who it is. He's been short and at the body, or back of a length and at the body. Does he now change and go wider Yorkers? He's got to go wide and full. Slower balls, knuckle balls. Oh dear. That could be taken, put down, Jadeja. I think it's going to be a no ball. Has to be. Has to be. But wait for the sound. No, he's gone straight for it. Straight for it. 24 off the last over. And now an opportunity for a free hit. 150 comes up for RCB as well. 9 runs off the first ball, essentially. Went for the Yorker. Oh! Jagadeesan did really well in the end. Beautiful delivery. He's been brought inside the ring for dropping a catch at long off. That's the old switcheroo, the captain saying, I want to get somebody else out there on the boundary, which was the right thing to do. He parries it for 6. And we've seen Jadeja since then put the no ball down, and Jagadeesan to also drop the free hit. Now, throughout the tournament, the catching has been indifferent. I thought Delhi were magnificent in Sharjah last night. They are sitting up there, though, with 11 drop catches out of 47. Looking for 2 more. They'll do it easy. When you look at CSK, they've only dropped 5, which is the second best. However, they've taken 33. So from a percentage-wise, if you can work that all out, it's probably the Mumbai Indians and CSK who, along with Kolkata probably, are the 3 that have done the best in this regard. RCB have been dreadful. 11 of 29. There'll be another opportunity. Who wants it? Jadeja's out there usually. No, Watson can't get there. It is a big boundary out there, so Watson running back, he's not as nimble as he once was. And the man coming in, so this isn't a chance. Dubé was right in the slot for him, slightly across the body though, so couldn't get hold of it. But this has got, I mean, I looked at this 2 overs ago and thought they'll do well to get to 150. Could easily get 170, 175 the way it's going now. This is the double header, the second of the 2.
And it's a big encounter, but it doesn't end there. Tomorrow morning at 3 p.m. Well, tomorrow afternoon, isn't it, really? It's tomorrow morning for us. Sunrisers versus the Rajasthan Royals live from Dubai. The same ground, most likely the same pitch. That's a must-win, much like this afternoon's game was for both those sides. And the top-of-the-table clash. I've been waiting for this one. That may be a wide as well, is it? No, they'll take the end of the over. We'll come back to that. 155 for 4. For the merger between a jazz fan and techno. New Tiguan All-Space fits all. Volkswagen. Okay, 1 too many mother lovers be around ya. 6 feet deep, bury them in the ground, yeah. Sing a eulogy on your grave with my hounds. Don't try to count anybody in allowed, yeah. कोडिंग सीखने से उसमें मास्टरी तक, जॉब की तैयारी से स्टार्टअप की जिद तक, हमेशा आपके साथ. Be curious with Coding India. Over to go, and Dwayne Bravo, it looks like, will be the man who's owned this death bowling role. A little bit of length, not enough for him to get underneath it. He's got a sore hand after that. Kohli smashed it. Plenty of players capable of doing that as well. The two form teams in this year's Dream 11 IPL match up. Could this be a prelude to the final? Still got a month to go. We'll find out then. Abu Dhabi is the venue, slightly slower. Delhi in particular, who are in Sharjah yesterday, will need to make some adjustments. But I am looking forward to that Sunday night matinee, to a brilliant weekend. And Dwayne Bravo's got issues with that hand. And he's doing the right thing, Swanee, because he's just taking his time. He is. I think he's saying to the skipper here, maybe I've hurt my fingers here, I don't think I can bowl. Let's watch this. See how hard that's hit back. Honestly, that is so close to knocking all his teeth out on the ground. Would have been an interesting. So watch this. That is absolutely crunched. Oh my word. It's his non-bowling hand. No, he's talking to Dhoni about where to put the fielders. So maybe, can I put a helmet on, please? Jeez. Well, 4 balls left. It is physically possible for Virat Kohli to get to 3 figures. PTM Fair Play Award. Kolkata. They did drop a decimal point after this afternoon. I'm not having Rajasthan bottom of this league. The bottom of the Fair Play Award and the IPL. Rajasthan now. That's not on. Come on, Rajasthan, we're a fair team. We play above the board. Yeah, that's nicely done when you think that he's just taken a blow on the hand. Kohli's coming running back. Brilliant, Kohli.
And I think he's made it. He's so quick between the wickets. Brilliant, brilliant running, Virat Kohli. It's not a big boundary. Still straight to Sam Curran. He's made this, I know it. It's nicely just used the hands and opened the face. And watch him turn there. And just straight away, Unacademy learned from the best. Committed immediately. And just made it. Brilliant running, Virat Kohli. Straight down the middle of the wicket. He wants 100, I'm telling you. 85 now, 3 balls left. Just 2 sixes, 1 doesn't have to do, yeah, doesn't have to hit 3 sixes. His team will take it. It's turned into a masterclass, hasn't it? 85 of just 49. 2 more. Not got the strongest arm, Faf du Plessis. Probably the one part of his fielding which isn't quite as strong as the catching and the shot saving. Yeah. Doing it in even numbers at the moment for CSK. No 6s or 4s in the last 3 balls is a good thing. 12 runs still with a ball to go. Kohli, I think, will want to get up over 170. And it will be I think, a pretty good fight back from where they were 5 or 6 overs ago. Most definitely. I think this would be one of the best 95s you're going to see. I'm giving him 6. Oh, there we go. Where's he hitting it? Straight. I think straight over mid-off. When you get the eyes of the current Indian captain bearing down on you as the umpire. Yeah, sure, that's a wide. Well, whatever way he's looking, he had Dhoni's eyes bearing down on him. Exactly. Dhoni takes it and starts running towards the umpire. I said, no, that's fine. That was cool. That was great. Definitely not wide. So who are you believing, Dhoni or Kohli in that situation? It's a bad choice. The umpire's just marked his cards there, hasn't he? He's not allowed back in Chennai now. Final ball. It was what will he do? The right decision. Brian Lara says 95 not out for Kohli. Bold. Beautiful delivery. Take 90 not out instead. And RCB will finish their 20 overs at 169 for 4. Brilliant, Virat Kohli. Take a bow. I think this kid's got a future in the game. I really do. He's not had the greatest start to the IPL until the last game when he came back into form, and tonight he's just looked superb. So he gets 90 from 52. RCB make 169 for 4. Much better than it looked for a long time. So, will we see a score in the 160s be enough for the second time today? Yeah, all to play for, that is for sure. Top order did not get going at all. You don't see that often for RCB. Padikkal, Finch, de Villiers and Washington Sundar promoted to number 5. So Gurkirat Man, a specialist batsman, doesn't get an opportunity. But Kohli's 90 stands out. Nice little cameo from Shivam Dubey as well. So the 169, it's on the board. CSK, well, I thought they bowled really well. Just the 2 overs for Jadeja economically at the bottom. And Deepak Chahar did a great job, all 3 of those coming up front and picking up the 1 wicket of Aaron Finch to boot. So just to confirm for you all where we stand in this match, 20 overs left in the matinee event of the evening. This encounter between 2 of the big dogs in this Dream 11 IPL. CSK, they need 170 to win this match. We will take a quick breather, come back with the top moments of the first innings.